91 क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। जो कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोक्रोम BC1 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। Next question is polymerase chain reaction PCR amplifies DNA following the equation n की power 2, 2n plus 1, 2n power 2. So the correct option is option number B, 2n. n is equal to 2n where n is equal to number of PCR. Next question is, what are the potential drawback in absorption of the IVF method? High facility risk to mother, expansion instrument and reagent, ये एक हमारा ड्रॉबैक है. ह्यूमन हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, लेस एडॉप्शन और ओपरेंस, ये एक हमारा ड्रॉबैक है. नॉट अवेलेबल इन इंडिया, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्विस, एक ही हमारा ड्रॉबैक. सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो B, D, F. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, B, D, F. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to heart in the human? हमें ब्लड वेसल्स का नाम बताना है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन इन द फ्रॉग. एरोटा, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, वेना कावा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, वेना कावा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following statement refer to reductionist biology? Physiochemical approach to study and understand living organism, physiological approach to study and understand living organism, chemical approach to study and understand living organism, behavioral approach to study and understand living organism. So the correct option is option number A, physiochemical approach to study and understand living organism. Next question is, given below are two statements. Statement 1 है, in the RNA world, RNA is considered the first genetic material involved to carry out essential life process. RNA act as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system. Being reactive, RNA is unstable. ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है statement 2, DNA involved from RNA and is a more stable genetic material. Its double helical standard being complementary resist changes by evolving repairing mechanism. In the light of the above statement, ये भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन है, in the light of the above statement choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is correct. So the correct option is option number A, both statement 1 and statement 2 are correct. Next question is, epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? epiphytes जो हमारा mango branch में growing होता है वो किसका example है? Communalism, mutation, production, analysm. So the correct option is option number A, communalism. Next question is, from the statement given below choose the correct option. The eukaryotic ribosome are 80S and prokaryotic ribosome are 70S. ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 40S वाइल डेट ऑफ 70S आर 50S एंड 30S. ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. डी है, द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 60S एंड 20S एंड डेट ऑफ 70S आर 50S एंड 20S. ये हमारा रॉन्ग है. ई है, the 2 sub unit of 80S are 60S and 30S and that of 70S are 50S and 30S. ये भी हमारा wrong statement है. So the correct option is A, B, C. The correct option is option number A. Next question is, which one of the following is an example of ex situ conservation? कौन सा इनमें से ex situ conservation का एग्जाम्पल है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूस एंड बॉटनिकल गार्डन, प्रोटेक्टेड एरिया. So the correct option is option number C, zoos and botanical gardens. Next question is, given below are 2 statement. Statement 1 है, the primary source of energy is an ecosystem is solar energy. ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है,
Statement number 2, the rate of production of organic matter during photosynthesis is an ecosystem is called net primary productivity NPP. ये हमारा एक wrong statement है. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So the correct option is option number C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Next question is, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में पहले हमें दिया है एम्फाइज्मा. ये होता है हमारा डैमेज एल्वुलर वॉल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस. नेक्स्ट है एंजिया पिट्रोरस. तो ये होता है एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ड मसल. नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस नेफ्रिटिस. तो ये करता है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोबुलर ऑफ किडनी. फिर है टेंटे. ये होता है रिपीट स्नैप्स इन मसल ड्यू टू low CA++ in a body fluid. A second, B third, C fourth, D first. So the correct option is option number D. Next question is, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion है both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. Reason है the फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. तो हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक ब्रीवेज प्रोडक्शन बाय द ईस्ट. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक ब्रीवेज प्रोड्यूस बाय ईस्ट? विस्की, ब्रांडी, बियर, रम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बियर. Next question is, given below are two statement. Statement 1 है in a floral formula stand for zygomorphic nature of the flower and G stand for inferior ovary. Statement 2 है in a floral formula stand for actinomorphic nature of a flower and G stand for superior ovary. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो हमारा statement 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेक्ट्रोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस इज यूज्ड फॉर. स्पेक्ट्रोकाइनेस प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस, वो किसके लिए यूज़ होता है? कल्ट प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन, लीवर डिजीज ट्रीटमेंट, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ जीन? क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम वाई, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 10. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम वाई. Next question is, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? First and second digit of prolimb, first digit of hindlimb, second digit of forelimb, first digit of the forelimb. So the correct option is option number D, first digit of the forelimb. Next question is, which one of the following phytohormone promote nutrition metabolism which help in the decay of leaf centration in plants? Ethylene, abscisic acid, gibberellin, cytokinin. So the correct option is option number D, cytokinin. Next question is, while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histological of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What would be the possible coelom of that animal? A coelomate, pseudocoelomate, schizocoelomate, spongocoelomate. So the correct option is option number B, pseudocoelomate. Next question is, match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में है हेड. हेड होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल. मिडल पीस होगा एनर्जी, एक्रोसोम, एंजाइम,
tail, sperm motility. A fourth, B third, C first, D second. So the correct option is option number A. Next question is, given below are the stages of life cycle of pteridophyte. Arrange the following stage in the correct sequence. Prothallus stage, meiosis in spore मदर सेल, तो ये फर्स्ट में आएगा. फिर देन प्रोथैलस स्टेज, फिर फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्केगोनिया एंड आर्किडिया इन गैमेटोफाइट, ये हमारा थर्ड में आएगा. देन ट्रांसफर ऑफ एनार्थोजोइड टू द आर्केगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये फोर्थ होगा. एंड फर्टिलाइजेशन फिफ्थ होगा. BADEC. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cardiac activities of the heart are regulated by nodal tissue, a special nerval center in the medulla oblongata, adrenal medullary hormones, adrenal cortisol hormone. Choose the correct answer from the options given below. So A हमारा सही है, nodal tissue से होता है. A specialized nerve center in the medulla oblongata, ये भी हमारा सही है. एंड adrenal medullary hormone होता है, ये भी सही है. So A, B, C only. So the correct option is option number A. Next question is, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता. एजोबैक्टर, ऑजिलेटेरिया, एनाबीना, वॉल्वैक्स, नॉस्टेक. सिर्फ हमारा वॉल्वैक्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. A ओनली, D ओनली, B ओनली, E ओनली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, D ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 है ट्रांसफर RNAs एंड राइबोसोमल RNA डू नॉट इंटरैक्ट विथ mRNA, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 2 है RNA इंटरफेस RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D. स्टेटमेंट 1 is correct, incorrect, but statement 2 is correct. Next question is 105 है, in the above represented plasmid an allele piece of DNA is inserted at E. coli site. Which of the following strategy will be chosen to select the recombinant colonies using amplifier and tetracycline containing medium plate? Blue color colonies will be selected, white color colonies will be selected, blue color colonies grown on amplifying plate can be selected. So the correct option is option number C, white color colonies will be selected. Next question is, which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? Bacterium, yeast, virus, phage. So the correct option is option number A, bacterium. Next question is, name the class of enzyme that usually catalyze the following reaction: hydrolase, ligase, transferase, ligase. So the correct option is option number C, transferase. Next question is, find the statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem. Hypodermis is parenchymatous, vascular bundle are scraded, vascular bundle are cojoint and closed, phloem parenchyma is absent. So the correct option is option number A, hypodermis is parenchymatous. Next question is, the correct sequence of events in the life cycle of Bryophyte is. So सबसे पहले हमारा होता है अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ सबस्ट्रेम. नेक्स्ट हमारा होता है रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू वाटर. नेक्स्ट होता है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू एग. नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट. एंड लास्ट होता है रिडक्शन डिवीजन और टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर. BEADC. So the correct option is option number C. Next question is, which are correct? हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है. कंपोटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये सही है. कीमोथेरेपिटिज्म ड्रग आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल. अल्फा इंटर, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेटेड द
कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. कीमोथेरेपिज्म ड्रग आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. इन द केस ऑफ ल्यूमिना ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीजेस, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. बी एंड डी ओनली, डी एंड ई ओनली, सी एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारा सेंट्रोमियर, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में. सीलियम ये होता है, हेल्प करता है सेल मूवमेंट में. सिस्टन है, ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियन में. सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है. सो ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी फोर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए हमारा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में. क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी हमारा होता है येलो ग्रीन. जेंथोफिल्स ये होता है हमारा येलो. एंड कैरोटेनॉइड्स ये होते हैं येलो टू येलो ऑरेंज. ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी सेकेंड, डी फोर्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. फर्स्ट है in pregnancy the major organ system are formed at the end of 12 weeks, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 weeks, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है. इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ द गेस्टेशन, एंड ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्फ एंड डाइजेस्ट डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd month, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड लास्ट है हमारा इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड इन 5th month, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ए सी डी एंड ई ओनली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीट ऑफ कर्ल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेटेड द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, इसे हम कहते हैं एन एलुरेनन लेयर. Next question is which of the following diagram is the correct with regard to the proximal P and distal D tubule of the nephron. So the correct option is option number B, ये हमारा correct representation है proximal P and distal D tubule of the nephron. Next question is identify the part of the bioreactor which is used to form beaker from the given below. So the correct option is option number D. Next question is given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion है a typically unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 celled, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. रीजन है the egg apparatus has 2 polar nuclei, ये हमारा रॉन्ग है. So A is true but R is false. So the correct option is option number C. Next question is a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication and respiration is mesosome, chromatophores, cisternae, endoplasmic reticulum. So the correct option is option number A, mesosome. Next question is which of the following are the पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल. हमें बताना है इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इवेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म, पैरियर ऑफ स्प्लेनिन, ये हमारा नहीं है. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन, ये है हमारा. सी है एडिशनल ऑफ मिथाइलिन ग्रुप एट 5 end ऑफ HNRNA, ये भी हमारा. डी है एडिशन ऑफ एडेनिल रेसिड्यूज एट 3 end ऑफ HNRNA, ये भी हमारा. बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNAs, ये हमारा रॉन्ग है. सो बी सी डी ओनली. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज